I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. In the part first of cardiovascular system, we have seen what is the functions of heart. Okay, we have seen the structure of heart. We have seen the blood flow in the heart, circulation of blood in the heart, the sequence of blood flow in the heart. We have seen the details information about the heart. What is right side, what is left side of your heart. We have seen myocardium, layers of your heart, pericardium, myocardium, endocardium. We have seen about the blood vessels also, the layers of blood vessels. So what do you mean by arterial system? And then venous system we have seen. Difference between artery and vein we have already seen, right? Then I think we have also seen diseases of blood vessels. We have also seen the again this part. We have seen the event of cardiac cycle, right? So we have seen this part, event of cardiac cycle and all that. So we have also seen these important parameters. What do you mean by heart sound and all that? But we'd like to revise from this slide. I would like to take again from this slide. तो हार्ट साउंड सबसे मेन चीज क्या है? पहला का हार्ट साउंड. यू आर एबल टू हियर द हार्ट साउंड when there is a diaphragm or when there is a stethoscope in your hand. If you place a stethoscope just below the left chest, or you will able to hear the heart sound. So there are two type of sound, दो टाइप का साउंड होता है हार्ट में. तो एक होता है लब, एक होता है डब. Heart sound, lub dub. So lub sound is because of the closure of arterioventricular valve. जो लब साउंड होता है, that is loud, and it is due to the closing of arterioventricular valves. And dub sound is a little bit softer, मतलब सॉफ्ट होता है वो. जैसे लब साउंड है ज्यादा हार्ड होता है, लाउड होता है. डब साउंड थोड़ा सा डीप, थोड़ा सा soft होता है. That is due to the closure of aortic and pulmonary valves. Okay. Heart rate is nothing but the number of heart beats per minute. Heart rate क्या होता है? Number of heart beats per minute. Okay. Now heart rate normal heart rate is around 60 to 80 beats per minute, known as a pulse. Now it is nothing but the impulses generated by SA node. SA node क्या होता है? SA node is nothing but the collection of particular type of cell which generate impulse, electrical signal. So SA node as having specialized type of cell which is able to excite. वो एक electrically unstable cells होते हैं जिसमें rhythmicity होता है. Rhythmicity means alternate stimulation and relaxation. So it will produce electrical impulses, 60 to 80 electrical impulses per minute, right? That will be passed through the AV node and conduction system of heart and then to the ventricles, right? Now heartbeat on an average you can see 72 beats per minute, or some books also have mentioned 74 beats per minute. Actually it's a average value and plus minus can be there. जैसे आप हार्ट रेट जो ना नॉर्मल किसी का ऐसा होता नहीं, मतलब 72 बोलने के लिए है, लेकिन अगर 73 हार्ट रेट है मतलब एबनॉर्मल नहीं है, 74 हार्ट रेट है मतलब एबनॉर्मल नहीं है ना. 70 इज जस्ट एवरेज ऑफ 100 पीपल. जैसे 100 पीपल ले लिए आपने, 100 लोग ले लिए, उनमें का एवरेज हार्ट रेट कैलकुलेट किया तो अराउंड 72, बट इट मे बी अराउंड 60 to 80. 60 हार्ट रेट से 80 हार्ट रेट तक भी नॉर्मल है, नहीं तो फटक से हॉस्पिटल जाएंगे आप.
there is no need. ठीक है. Now abnormal heart rate is known as arrhythmia. So abnormal heart rate or abnormal signal or abnormal heart rate or abnormal electrical impulse generation or conduction is known as arrhythmia, right? Known as arrhythmia. So we are going to see drug used in the cardiac arrhythmia. So at that time you will came to know different types of arrhythmia. Arrhythmia क्या होता है? Disturbance in the rhythm of heart, है ना? The name arrhythmia indicate. arrhythmia मतलब क्या है? Arrhythmia. Arrhythmia. तो rhythmia क्या है? Rhythmia मतलब 72 beats per minute. So that is the rhythm of your heart. So disturbance in the rhythm of your heart known as arrhythmia or arrhythmia. There are different types of arrhythmia. We'll see later on. Now cardiac output. Cardiac output means what? The amount of blood that is being expelled, amount of blood that is being pumped per unit time from the heart. हार्ट में से कितना ब्लड आपका निकल रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम एंड इनटू हार्ट रेट. तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम. तो ये फॉर्मूला याद रखना है. ये फॉर्मूला ऑलरेडी एक बार एग्जाम में आ चुका है. कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम. तो है ना, नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम इज अराउंड 70 ml. स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब क्या है? इट इज नोन एज एंड डायस्टोलिक वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, है ना. मतलब बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर वेंट्रिकल्स द अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल इज नोन एज एंड डायस्टोलिक वेंट्रिकुलर वॉल्यूम. दैट इज अराउंड 71. सो नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml and approximate heart rate is around 70 or 72. Just multiply them, you will get a value around 5 liter. तो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 5 to 6 liter per minute. So around 5 to 6 liter of blood is being pumped through your heart into the blood vessels per minute. तो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट, ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. व्हाट इज नॉर्मल कार्डियक आउटपुट? 5 to 6 liter per minute. Suppose your stroke volume is 70 ml and your heart rate is 70. You will get a 4900, है ना, that is a cardiac output. So liters, है ना, stroke volume into heart rate. Okay, so stroke volume divided by pulse, you will get a, again cardiac output divided by pulse, you will get a stroke volume. तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, राइट. कार्डियक आउटपुट. नाउ हार्ट रेट जो है, इट विल बी इंक्रीज्ड डिक्रीज. देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द हार्ट रेट. जैसे नॉर्मली वुमेन्स में क्या होता है? वुमेन्स हैव मोर हार्ट रेट देन मेंस. वुमेन्स का हार्ट रेट ज़्यादा होता है, मेंस का हार्ट रेट कम होता है. मेंस विल हैव लेस हार्ट रेट, वुमेन्स हैव मोर हार्ट रेट. सपोज यू आर लाइंग, आप बेड के ऊपर सो रहे हो आप, इन दैट केस योर हार्ट रेट विल बी लेस. बट आप जैसे खड़े हो तो आपका हार्ट रेट थोड़ा बढ़ेगा. आप जैसे चल रहे हो, घूम रहे हो, हेवी एक्सरसाइज कर रहे हो, भाग रहे हो, हार्ट रेट विल इंक्रीज. सो हार्ट रेट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. लॉट ऑफ फैक्टर्स आर अफेक्टिंग ऑन हार्ट रेट. सो दैट इज अनदर थिंग. ठीक है. नाउ ड्यू टू एक्सरसाइज स्ट्रोक वॉल्यूम कैन बी इंक्रीज्ड एज अ वेनस रिटर्न विल बी इंक्रीज. ड्यू टू एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, हेवी वर्कआउट कर रहे हो, उस टाइम पे क्या होता है कि आपका वेनस रिटर्न जो है, वेन से जो ब्लड आएगा हार्ट में, वो बढ़ता है. दैट्स वाई आपका कार्डियक आउटपुट भी बढ़ता है. एंड दैट इंक्रीजेज द स्ट्रेच ऑन अ मायोकार्डियम वेंट्रिकल. ओके, मायोकार्डियम ऑफ वेंट्रिकल्स एंड नोन एज अ स्टर्लिंग स्ट्रोक. नॉर्मल कार्डियक आउटपुट आपका कितना होता है? 5 to 6 liter per minute. But this cardiac output will be increased in case of heavy exercise. अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना, तो उसका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा. ठीक है. नाउ एनीथिंग that will increase the stroke volume will increase the cardiac output. Anything that will increase the heart rate will increase the cardiac output. ठीक है. तो स्ट्रोक वॉल्यूम को कोई भी फैक्टर इंक्रीज करता है तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा. हार्ट रेट को कोई भी फैक्टर इंक्रीज करता है तो आपका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा. तो स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे डिसाइड करेंगे? तो स्ट्रोक वॉल्यूम इटसेल्फ डिपेंड ऑन द ब्लड वॉल्यूम. ब्लड का कितना वॉल्यूम है उसके ऊपर स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड करता है. ब्लड वॉल्यूम अल्टीमेटली इंक्रीजेस द स्ट्रोक वॉल्यूम. सो इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड अल्टीमेटली द कार्डियक आउटपुट. ठीक है.
Now ejection fraction and cardiac reserve. So ejection fraction very important, and cardiac reserve. Ejection fraction का normal ejection fraction कितना होता है? Around 60 to 70%. Normal ejection fraction is around 60 to 70%. What is that ejection fraction? The percentage of blood within the ventricle that is being pumped out per beat. So percent of blood within the ventricles that is being pumped out per beat. That is the ejection fraction. Normal ejection fraction कितना होता है? Around 60 to 70. Now if the ejection fraction goes down, अगर ejection fraction 40% से कम होता है, if ejection fraction is less than 40%, that is known as falling heart or failing heart. तो heart fail क्या होता है? So heart is not able to pump the required amount of blood. So in that case ejection fraction decreases. 40% से कम अगर ejection fraction है तो उसका heart क्या है? Heart fail हो रहा है. Normal cardiac reserve is a 15 liter and more, or more. Normal cardiac reserve is a 15 liter or more. It's difference between resting cardiac output and maximum output during the exercise. तो cardiac reserve क्या है? It is a difference between resting cardiac output, मतलब when your heart is at rest, कोई exercise नहीं करोगा, तो at that time normal cardiac output and maximum cardiac output during the exercise, उसका जो difference है उसको बोलते हैं cardiac reserve, right? This we have already seen, but I have repeated. Now this also we have seen ECG. There are different waves. P wave is because of the atrial depolarization, QRS complex, PR interval, है ना? T wave, QT wave, ST wave. We have already seen. I have told you this in last lecture, right? Now stroke volume. What is stroke volume? Now it is determined by amount of blood in a ventricle before they contracts. So stroke volume, or you can say ventricular end diastolic volume, VEDV. क्या होता है? ventricular end diastolic volume. So amount of blood or volume of blood in the ventricles before they contract, known as the stroke volume, also known as the preload. ये आपको angina pectoris में काम आएगा. What do you mean by preload? So amount of, you know, it is nothing but the amount of blood in a ventricle before they contract. कि आपके ventricles में कितना blood है before ventricular contraction, known as a ventricular end diastolic volume, और also known as a preload. और ये preload आफ्टर लोड आपको मालूम होना चाहिए, आफ्टर लोड भी आएगा आपको. नो एट्रियल प्रेशर. एट्रियल प्रेशर मतलब क्या है? एट्रियल प्रेशर आल्सो अफेक्ट द स्ट्रोक वॉल्यूम, क्रिएट रेजिस्टेंस टू द ब्लड बीइंग पंप्ड. एट्रियल प्रेशर मतलब क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द aorta. एट्रियल प्रेशर. नाउ ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर इज नथिंग बट द, अगेन it is the product of cardiac output into peripheral resistance, and on this formula you have whole chapter. Antihypertensive drug आपका ये पूरा formula के ऊपर डिपेंड करता है. Blood pressure is nothing but the pressure exerted by blood on the wall of arteries. आपको ये तो मालूम होगा. Now blood pressure is calculated by using this formula, cardiac output into peripheral resistance. Now ये peripheral resistance क्या होता है? It's a resistance to the blood flow offered by arterioles. जो आर्टरीज होता है, बड़ा आर्टरी क्या है? सो लार्जेस्ट आर्टरी इज नथिंग बट द aorta, राइट? बट aorta इज हैविंग इलास्टिक टिश्यू, उसमें इलास्टिक टिश्यू होता है. सो इट कैन स्ट्रेच एंड इट कैन स्ट्रेच, इट कैन कंस्ट्रिक्ट, राइट? बट arterioles means smaller artery. So in that you have three layers: outer elastic layer, middle muscular layer, inner smooth layer. So middle muscular layer is supplemented with the नर्वस कंट्रोल, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, है ना? तो जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं आर्टरियोल्स, उसका जो मिडल लेयर है मस्कुलर लेयर, उसमें एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम एंड कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम का सप्लाई होता है, दैट कैन कंट्रोल द कैलिबर ऑफ ब्लड वेसल. वहाँ पे ब्लड वेसल का डायमीटर कंट्रोल किया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉरएड्रेनालिन एक्ट ऑन अल्फा रिसेप्टर विल कॉज वैसोकंस्ट्रिक्शन, राइट? तो है ना? Now blood pressure is nothing but the cardiac output into peripheral resistance. It is a product of cardiac output into peripheral resistance. Now blood pressure again, it is increased by exercise
है ना, डिपेंड होता है, इसके फैक्टर्स भी बहुत है. तो नॉर्मली इफ यू आर अंडर स्ट्रेस ब्लड प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड, if you are lying blood pressure will be less. So blood pressure is increased by exercise or it can be increased by increase in the body temperature. आपको फीवर आता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है? नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर इज 120/80. so what is 120? 120 is known as a systolic blood pressure. and a systolic blood pressure, ये systolic blood pressure क्या होता है? systolic blood pressure. so you know that normal blood pressure is around 120/80. तो इसका जो 120 है ये क्या है? systolic blood pressure. Systolic means what? So it is a pressure exerted on the wall of aorta when ventricles contract. जब ventricle contract होंगे तो blood will be ejected through the aorta. So at that time, so aorta has elastic tissue, so it create a pressure on aorta. So that is known as the systolic blood pressure. Now diastolic blood pressure means what? So diastolic is 80. Diastolic blood pressure means what? So diastolic blood pressure means when heart is relaxed, है ना, जब आपका हार्ट बीट हो गया, so आपका कंट्रैक्शन हो गया, जब हार्ट रिलैक्स होगा, तो ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन whatever small amount of blood is remaining in the blood vessel and small pressure is there, known as a 80 mm of Hg, है ना. So systolic blood pressure is a 120 mm of Hg. So when there is a contraction of ventricles, so it exerts a heavy pressure on the wall of aorta, known as a systolic blood pressure. And during the diastole, so small blood is remaining in the blood vessel, that also exerts a pressure known as the diastolic blood pressure. So blood pressure is expressed in the mercury millimeter of mercury millimeter, mm of Hg or kilopascal. So normal on an average 120/80 mm of Hg, or you can say 16/11 kilopascal. That is a normal blood pressure. Now blood pressure more than normal, अगर इससे ज़्यादा blood pressure होता है तो इससे मतलब 120/80 तो प्लस माइनस होता है उसका, लेकिन 140 के अगर ज़्यादा होता है ब्लड प्रेशर, मोर देन 140, systolic blood pressure more than 140 and diastolic blood pressure more than 75, known as hypertension. Hypertension means more blood pressure than normal. Hypotension means what? Hypotension मतलब less blood pressure than normal. Both are the disorder of blood pressure. Okay, and you have whole chapter on this. आपको एक पूरा chapter है blood pressure in the pharmacology, right? So you might have understood the blood pressure. समझ में आया blood pressure? So blood pressure is a product of cardiac output into peripheral resistance. इसके ऊपर भी question already आ चुका है. Now anything that will increase the peripheral resistance, any factor that will increase the peripheral resistance, or any factor that will increase the cardiac output. Any factor that will increase the cardiac output will increase the blood pressure. Anything that will increase the peripheral resistance will increase the blood pressure. Right? Now control of blood pressure. आपका blood pressure क्या है? Blood pressure of your body always changes with the condition, position of body, right? So short term control is on the basis of movement, involves the baroreceptor, reflex and chemoreceptor and circulating hormone. So blood pressure is regulated by two mechanisms. Blood pressure regulate करने के लिए दो mechanism होते हैं, एक होता है short term control और एक होता है long term control. Blood pressure is regulated by two mechanisms. Remember, very important. It is a physiology. अगर ये clear हो गया आपको तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आपको easily समझ में आएगा, right? So first, how there is a control of blood pressure? There are two mechanisms to control the blood pressure: short-term control of blood pressure and long-term control. Short-term control means what? So changes in the blood pressure due to movement. आप जैसे मैं बैठ रहा हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर अलग होगा, मैं लेट जाऊंगा तो ब्लड प्रेशर और कम हो जाएगा, खड़ा होके दौड़ने लगूंगा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. शॉर्ट टर्म कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, जैसे मैं ड्यू टू चेंज इन द मूवमेंट, ड्यू टू चेंज इन द एक्टिविटी. तो शॉर्ट टर्म कंट्रोल
is via baroreceptor and chemoreceptor. Baroreceptor reflex and chemoreceptor and circulating hormones. So in your aorta जो है आपका largest blood vessel, aorta is the largest blood vessel. In your aorta you have this baroreceptor, also known as a pressure receptor, also known as a stretch receptor. इनको ही अपन pressure receptor बोलते हैं, इनको ही अपन stretch receptor बोलते हैं, because they are sensitive to the pressure, they are sensitive to the stretch. तो baroreceptor क्या है? Located in the aorta, particular type of cell sensitive for the changes in the blood pressure, changes in the pressure, changes in the stretch, right? So baroreceptor. Now chemoreceptor means what? Chemoreceptor means it is a sensitive to changes in the chemical composition of your blood. Chemoreceptor मतलब क्या? Sensitive for again type of particular cells which are sensitive to change in the chemical in the blood, जैसे carbon dioxide, changes in the carbon dioxide, lactic acid, they are the sensitive for the changes in the carbon dioxide, lactic acid and pH of blood, right? Carbon dioxide, lactic acid and pH. So pressure sensitive receptor are nothing but the baroreceptor, and carbon dioxide, lactic acid, pH of blood sensitive receptor are nothing but the chemoreceptor. Both regulate the blood pressure for short term. जैसे अपन देखेंगे. Now long term regulation of blood pressure involves the regulation of blood volume via kidney. Now long term regulation of blood pressure is nothing but the regulation of blood volume by kidney. Now for that you have system known as the renin angiotensin aldosterone system. ना इसको अपन बोलते हैं RASS, RAS system, RASS, renin angiotensin aldosterone system. RAS, renin angiotensin aldosterone system. तो याद रखना है आपको, there are two mechanisms to control the blood pressure. First one is a short term mechanism and second one is a long term mechanism. Short term mechanism is nothing but the known as the baroreceptor reflex or chemoreceptor mediated mechanism. Long term is nothing but the RAS mediated system. So chemoreceptor है ना, baroreceptor. मैं बोलता हूँ आपको in your है ना, in your brain, known as a medulla oblongata. In your medulla oblongata you have cardiovascular center. Cardiovascular center क्या है? It is a collection of neuron in the medulla oblongata. ये जो CVC लिखा है cardiovascular center. So it is a collection of neuron which gets impulses, which gets signals from the receptors. So cardiovascular center present in the medulla oblongata. Okay? So it will get a signal from chemoreceptor and baroreceptor. तो पहले chemoreceptor क्या है? जैसे मैंने बोला changes in the blood. So increase in the pH और है ना phosphate और है ना, तो increase in the carbon dioxide, plasma carbon dioxide or plasma, decrease in the plasma oxygen or increase in the pH of blood. So these receptors are sensitive to changes in the chemical of plasma. तो ब्लड का केमिकल चेंजेस हो गया, कीमोरिसेप्टर एक्टिवेट होता है. कीमोरिसेप्टर कहाँ पे होता है? अगेन इन द आवर्टा, ना इन द आवर्टिक बॉडी, ना कीमोरिसेप्टर बैरोरेसेप्टर दे आर सिचुएटेड इन द आवर्टा ऑफ योर हार्ट. तो जैसे वहाँ पे ब्लड फ्लो होता है, चेंजेस इन द ब्लड है ना, केमिकल चेंज इन द ब्लड दैट इज नोटिस्ड बाय कीमोरिसेप्टर दैट विल सेंड सिग्नल टू कार्डियोवास्कुलर सेंटर CVS इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा. ये कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, राइट. तो अगर आपका pH ऑफ ब्लड बढ़ गया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, ब्लड में ऑक्सीजन कम हो गया, कीमोरिसेप्टर विल बी ट्रिगर्ड, दे विल सेंड अ सिग्नल टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन द कार्डियोवास्कुलर सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा. नाउ मेडुला ऑब्लोंगेटा विल डिसाइड नाउ एक्शन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन. What will it do? है ना,
it will stimulate and it will increase the sympathetic outflow. Sympathetic outflow बढ़ेगा, sympathetic nervous system stimulate होगा, noradrenaline release होगा, it will act on a heart, it will act on a blood vessels, so it will increase the stroke volume, heart rate and vasoconstriction, which leads to increase in the blood pressure. ब्लड प्रेशर कम हो गया, जैसे मान लीजिए पीएच ब्लड का बढ़ गया, ब्लड प्रेशर कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बढ़ गया, ब्लड प्रेशर कम होता है ना, ऑक्सीजन कम हो गया तो ब्लड प्रेशर कम होता है। जैसे ही कम होता है, ये जैसे बढ़ता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर होते हैं, दैट विल सेंड सिग्नल टू ए कार्डियोवास्कुलर सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड दैट विल इंक्रीज द सिंपैथेटिक आउटफ्लो, व्हिच विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। जैसे ब्लड प्रेशर कम अगर हो गया तो ये कीमो रिसेप्टर क्या करेगी, जैसे मान लीजिए इफ देर इज अ डिक्रीज द पीएच ऑफ ब्लड, डिक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड एंड इंक्रीज द ऑक्सीजन इन द ब्लड, पी मतलब प्लाज्मा, तो अगेन कीमो रिसेप्टर विल बी ट्रिगर्ड, they will send signal to cardiovascular center in the medulla oblongata. So in a medulla oblongata, brain will decide to decrease the sympathetic outflow, तो sympathetic system का outflow कम करेंगे, outflow कम हो गया तो यहाँ पे stroke volume कम होता है, heart rate कम होता है and vasoconstriction भी कम होता है, that will decrease the blood pressure. That is a chemoreceptor mediated actions. मतलब chemoreceptor क्या है कि they are the sensitive receptors for changes in the pH, carbon dioxide, plasma carbon dioxide, plasma oxygen. अगर ये pH बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो ये ब्रेन को सिग्नल देता है, कार्डियोवास्कुलर सेंटर को, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में, कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बढ़ गया, pH बढ़ गया, ऑक्सीजन कम हो गया, कुछ तो करो बड़े साहब। बड़े साहब क्या करते हैं, फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, सो ब्रेन विल इंक्रीज द सिंपैथेटिक आउटफ्लो। सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ गया मतलब क्या, ब्रेन से डिस्चार्ज होगा नॉरएड्रेनालिन। नॉरएड्रेनालिन आके हार्ट के ऊपर, हार्ट को स्टिमुलेट करेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा तो हार्ट रेट बढ़ाएगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, राइट, एंड आल्सो अंडरस्टैंड की हेल्प से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, कंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जैसे मान लीजिए आपके प्लाज्मा में पीएच कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया, है ना, और ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ गया, कीमो रिसेप्टर अगेन सिग्नल करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, कार्डियोवास्कुलर सेंटर को मेडुला ऑब्लोंगेटा में, और ये क्या करेगा कार्डियोवास्कुलर सेंटर, इट विल सिग्नल अगेन, इट विल डिक्रीज द सिंपैथेटिक आउटफ्लो। सिंपैथेटिक आउटफ्लो यहाँ पे कम करेगा, यहाँ पे सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ता है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ रहा है, यहाँ पे कम करता है, तो कम करेगा तो ऑब्वियसली वैसोकंस्ट्रिक्शन कम होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा, हार्ट रेट कम होगा, है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा, राइट। दिस इज नोन एज chemoreceptor mediated action. Now I will tell you baroreceptor mediated action or baroreceptor mediated reflex. Baroreceptor mediated. Baroreceptor mediated action. What happens? Baroreceptor are nothing but the pressure sensitive receptor. Baroreceptor क्या है? Baro is for the pressure. प्रेशर किसमें मेजर करते हैं, बार में ना, है ना, बैरो इज फॉर द बैरो इज द टर्म फॉर प्रेशर। तो बैरो रिसेप्टर आर नथिंग बट द स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द आवर्टा। अगेन आपके आवर्टा जो मेजर ब्लड वेसल होता है आपका आवर्टा, उसमें बैरो रिसेप्टर होते हैं, में भी क्या है, बैरो रिसेप्टर होते हैं। बैरो रिसेप्टर आर द सेंसिटिव फॉर द प्रेशर चेंज इन द ब्लड। जैसे ब्लड प्रेशर मान लीजिए आपका कम हो गया, बैरो रिसेप्टर दे आर सेंसिटिव फॉर द प्रेशर,
सपोज चेंजेस इन द प्रेशर, आपका पहले क्या है कि मान लीजिए ब्लड प्रेशर कम हो गया है, इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर ना, आपका ब्लड प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है, बीपी इज डिक्रीज्ड, बीपी कम हो गया है तो क्या होगा, सो बैरोरिसेप्टर दे विल डिटेक्ट द चेंजेस इन द ब्लड प्रेशर। बस ब्लड प्रेशर कम हो गया आपका तो बैरोरिसेप्टर क्या करेंगे, सिग्नल करेंगे। बैरोरिसेप्टर दे आर सेंसिटिव फॉर द प्रेशर चेंज इन द प्रेशर चेंज इन द, है ना, चेंज इन द प्रेशर ऑफ ब्लड इन आवर्टा। तो बैरोरिसेप्टर जैसे ही ब्लड प्रेशर कम हो गया है, ब्लड प्रेशर जैसे ही कम होता है, बैरोरिसेप्टर विल सिग्नल टू ए हाइपोथैलेमस, है ना, हाइपोथैलेमस जो कार्डियोवास्कुलर सेंटर है उसको सिग्नल करेंगे इन द पोन्स एंड मेडुला। बैरोरिसेप्टर जैसे ब्लड प्रेशर कम हुआ है तो इसको स्टिमुलेट करते हैं बैरोरिसेप्टर। ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर कम हो गया ना तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ाएगा, मतलब सिंपैथेटिक आउटफ्लो, और नॉर एड्रेनालिन बढ़ा देगा, विच विल कॉज नॉर एड्रेनालिन विल गो एंड इट विल एक्ट ऑन अल्फा 1 रिसेप्टर, विल कॉज द वैसोकंस्ट्रिक्शन, है ना, वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि बीपी इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ब्लड प्रेशर क्या है, कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। जस्ट a minute. Right, so blood pressure is controlled by two mechanism. First one is a baroreceptor mediated mechanism, second is a chemoreceptor mediated mechanism, right? So both regulate blood pressure for short term, ये दोनों भी बैरोरिसेप्टर एंड कीमोरिसेप्टर शॉर्ट टर्म के लिए रेगुलेट करते हैं ब्लड प्रेशर। तो कैसे रेगुलेट करते हैं, जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर आपका, इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, बैरोरिसेप्टर विल गेट अ लेस स्ट्रेच, मतलब बैरोरिसेप्टर तार के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, वैसे ही बैरोरिसेप्टर एक्टिवेट होके बैरोरिसेप्टर विल सेंड ए सिग्नल टू ए कार्डियोवास्कुलर सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, तो कार्डियोवास्कुलर सेंटर को बोल देगा कि ब्लड प्रेशर कम हो चुका है, कार्डियोवास्कुलर सेंटर क्या करेगा, बोलेगा ओके बॉस मैं करता हूँ कुछ, ये क्या करेगा, सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ाएगा, नॉर एड्रेनालिन रिलीज होगा जो ब्लड वेसल में जाके अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा, है ना, आपका पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगेन नॉर एड्रेनालिन डायरेक्टली स्टिमुलेट द हार्ट, इंक्रीज द हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, सो आल्सो इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, नॉर्मल हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर कम हो गया तो ये होगा, मान लीजिए ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा हो गया, तो इफ देयर इज ए इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर देन व्हाट विल हैपन, if there is an increase in the blood pressure, again baroreceptor will be stimulated। पहले केस में क्या होता है कि जैसे ब्लड प्रेशर आपका कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो गया, बैरोरेसेप्टर क्या करेंगे, बैरोरेसेप्टर इन फर्स्ट केस ब्लड प्रेशर आपका कम हो गया, इन दैट केस बैरोरेसेप्टर विल स्टिमुलेट, बैरोरेसेप्टर विल गेट a signal, बैरोरेसेप्टर विल गेट less pressure, so they will signal to a brain via cardiovascular center to increase the sympathetic output।
in this case, and blood pressure will be increased. मान लीजिए blood pressure already बहुत ज़्यादा है. If there is an increased pressure, if there is an increase in the blood pressure, the baroreceptor again they are sensitive for pressure change, so they get activated. They will send less signal. यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्नल कम करेंगे, so less signal will be there, और है ना, less signal will be there, so less parasympathetic activity, मतलब decrease in the sympathetic outflow and increase in the parasympathetic outflow. यहाँ पे क्या होगा, parasympathetic outflow बढ़ेगा, मतलब acetylcholine रिलीज होगा, so acetylcholine will decrease your heart, decrease the cardiac output and blood pressure, तो vasodilation होगा वहाँ पे. So this is how baroreceptor will control the blood pressure for short term. You can see over here again. यहाँ पे मान लीजिए decrease the blood pressure कम हुआ है, देखो decrease the blood pressure, so decrease the baroreceptor activity कम होगा, तो है ना, so there is a sympathetic outflow which leads to increase in the heart rate, force of contraction, ठीक है, and also sympathetic outflow will cause vasoconstriction, blood vessel constriction, which increases the blood pressure. मान लीजिए blood pressure कम हो चुका है, if there is a decrease in the blood pressure, so if there is a decrease in the blood pressure, baroreceptor activity will be increased, it will send signal to brain, there is a parasympathetic impulse, okay, and parasympathetic system में अगर एक्टिवेट हो गया तो acetylcholine release होगा, so that will act on the heart, decreases the heart rate, force of contraction, and decreases the also causes the vasodilation in the blood vessel, which causes the decrease in the blood pressure. तो दोनों केस है, देखो blood pressure अगर कम हो गया है, so if there is a decreased blood pressure, so baroreceptor will send a signal to a brain in the medulla oblongata. medulla oblongata क्या करेगा, blood pressure कम हो गया है तो क्या बढ़ाना है, तो sympathetic nervous system activity, it will activate or increase the sympathetic outflow, which will release the noradrenaline. Noradrenaline will go in the heart, increase the heart rate, increase the force of contraction. Noradrenaline will go on the blood vessel, will cause vasoconstriction, which will increase the peripheral resistance, which will increase the blood pressure. Finally blood pressure यहाँ पे increase होगा, कैसे now suppose blood pressure already ज़्यादा है, if blood pressure is more, again baroreceptor will, its activity of baroreceptor will be increased, baroreceptor will send signal to brain that there is increase in the blood pressure, है ना, कम हो गया ब्लड प्रेशर, तो baroreceptor बोलता है कि भाई साहब प्रेशर कम हो गया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम हो गया, तो ब्रेन को बोलेगा, ब्रेन बोलेगा क्या, ठीक है मैं देखता हूँ, तो वो सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ाएगा, हार्ट रेट बढ़ाता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है. तो अभी ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो फिर से बायोरेसेप्टर ब्रेन को सिग्नल करेगा क्या, भाई साहब प्रेशर बहुत ज़्यादा है ना, तो ब्रेन बोलेगा ओके चलो मैं देखता हूँ, तो क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगा, एड्रेनालिन की बजाय एसिटिलकोलिन रिलीज करेगा, यहाँ से एसिटिलकोलिन डिक्रीज द हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, आल्सो एसिटिलकोलिन कॉजेज वासोडाइलेशन, है ना, तो हार्ट रेट कम हो गया, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो गया तो ब्लड प्रेशर कम होगा, जैसे हार्ट रेट बढ़ गया, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया तो कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, हार्ट रेट कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, सॉरी हार्ट रेट कम हो गया, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो गया तो कार्डियक आउटपुट कम होता है, तो बाय डिक्रीजिंग द कार्डियक आउटपुट it will decrease the blood pressure and also by causing the vasodilation it will decrease the peripheral vascular resistance, blood pressure will be decreased, blood pressure कम हो गया तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ता है. This is the way how baroreceptor will control the blood pressure, right? Now baroreceptor are known as a pressure receptor or stretch receptor. They are present in the wall of aorta and carotid sinus. Blood pressure disturbed by movement. Okay, blood pressure disturbed by movement. If there is decrease in the blood pressure,
So baroreceptor will send signal to brain, and brain will increase the sympathetic activity, will increase the blood pressure, force of contraction and vasoconstriction. If opposite, if blood pressure is high, again baroreceptor will send a signal to brain, pressure बढ़ा है, so it will increase the parasympathetic outflow. Now chemoreceptor, they are sensitive for the changes in the pH, carbon dioxide, lactic acid. So what is primary controls the respiration, sensitive to the oxygen and acidity of blood, pH of blood, right? So I have told you. Now this one is a pulse pressure. PC means pulse pressure. So PC means pulmonary circulation. So pulmonary circulation means circulation of blood to the pulmonary, circulation of blood to the lungs via pulmonary artery. Pulmonary circulation. If blood pressure of pulmonary pressure exceeds 25 mm/g, अगर lungs में इतना से इतने प्रेशर से ज़्यादा हो गया, तो in the lungs if blood pressure exceeds 25 mm/g, that leads to pulmonary edema. Pulmonary edema, lungs में पानी भर जाए, right? Control of blood pressure, I told you there are two. Blood pressure is controlled by two mechanisms, short term and long term. Short term control is via chemoreceptor, baroreceptor, increase or decrease in the activity of sympathetic parasympathetic nervous system, right? Second control is nothing but the long term control, which is known as a regulation of blood volume by kidney. You will see that, don't worry. Sequence of blood flow in the heart we have already seen. Left ventricle, right ventricle में blood आएगा, superior and inferior vena cava से, right ventricle से blood जाएगा, right atrium में blood आएगा via veins. Major vein कौन सा है? Superior vena cava, inferior vena cava. Blood will be transported from right auricle to the right auricle or right atrium to the right ventricle via atrioventricular valve is present over there. Then बाद में blood है ना. We already seen the sequence of blood flow, so there is no need to tell you again. So blood received from upper and lower body part via superior and inferior vena cava, it get collected in the right atrium or right auricle. Tricuspid or atrioventricular valve will prevent the backflow of blood from right ventricle to the right atrium when right ventricle contracts. So blood from lungs, from right ventricle, blood will be pumped to the pulmonary artery to send the blood to purification. Blood from lungs, I have 4 pulmonary veins received in the left atrium. तो जब है ना, तो राइट साइड ऑफ योर हार्ट क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इम्प्योर ब्लड जो है कहाँ से आता है आपका? जो अपर लोअर बॉडी पार्ट है, अपर पार्ट बॉडी पार्ट, लोअर बॉडी पार्ट, वो आएगा राइट एट्रियम में और राइट ऑरिकल में, है ना. राइट ऑरिकल से ब्लड जाएगा कौन सा? राइट वेंट्रिकल में, है ना. तो उनके बीच में क्या है? ट्राइकस्पिड और एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है. राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा आपका पल्मोनरी आर्टरी में. पल्मोनरी आर्टरी मतलब लंग्स में जाएगा. ब्लड फ्रॉम लंग्स collected via 4 veins. Pulmonary veins will drain their content into left atrium. Left atrium में pulmonary vein से blood आएगा 4 से. Therefore, mitral valve is present or bicuspid valve is present between left ventricle and left auricle. So from left auricle blood will be sent to left ventricle, and when left ventricle contracts, blood is sent to aorta to prevent the backflow of blood. Mitral valve is there, right? Heart will act as a double pump. So right side of heart will receive deoxygenated blood. Left side of your heart will pump oxygenated blood at the same time, simultaneously. Yeah. Now cardiac cycle also we have seen. Now how there is a contraction of muscle of heart. So there is electrical changes in the myocardial muscle. Electrical changes in the myocardial muscle. You know that
साइनोएट्रियल नोड, ऐसे नोड क्या है आपका, ऐसे नोड इज नोन एज अ पेस मेकर, ऐसे नोड इज नोन एज अ पेस मेकर, ऐसे नोड will ऐसे नोड विल जनरेट अ इम्पल्सेस, ऐसे नोड आपका इम्पल्स जनरेट करेगा, ऐसे नोड राइट। तो ऐसे नोड कहाँ पे होता है, यहाँ पे, दिस इज नोन एज ऐसे नोड विच इज सिचुएटेड जस्ट अबव द राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम जो है, राइट ऑरिकल और राइट एट्रियम, वहाँ पे ऐसे नोड है, स्पेशलाइज्ड collection of specialized cells which are electrically unstable, which generate rhythmic impulses. Impulse will be generated from ऐसे नोड 60 to 80 impulse which will be generated. ये impulse कहाँ जाएंगे, एट्रियम में जाएंगे, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब ऑरिकल्स और एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो ब्लड जाएगा वेंट्रिकल में। तो अगेन दिस इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड टू एवी नोड। एवी नोड मतलब क्या, एवी नोड मतलब क्या, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड which is a relay station. AV node also has a capacity to generate the impulse but at a lesser extent, 40 beats per minute. ऐसे नोड इज अ पेस मेकर ऑफ हार्ट, तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे इम्पल्स धीरे हो जाएगा, देयर इज अ डिले इन द इम्पल्स। सो फ्रॉम द एवी नोड, so it is sent to the bundle of His and Purkinje fiber. There are two Purkinje fiber, left bundle branch and right bundle branch, that will divide into Purkinje fiber which is supplied on a myocardial muscle of ventricles. तो इम्पल्स जनरेशन होगा साइनोएट्रियल नोड में, ट्रांसफर होगा एस नोड के ऊपर, इस नोड से धीरे इम्पल्स जाएगा पर्किंज फाइबर से, मतलब है ना, इस नोड से जाएगा बंडल, है ना, लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ हीज, देन पर्किंज फाइबर, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा वेंट्रिकल्स का। दिस इज द कंडक्शन सिस्टम ऑफ योर हार्ट। Any defect in the either in impulse generation, defect in the impulse generation or defect in the impulse conduction causes the arrhythmia. Cardiac arrhythmia क्यों होता है, either there is a impulse generation defect or impulse conduction defect. Defect in the impulse generation or impulse conduction leads to cardiac arrhythmia. जैसे ही impulse आता है मायोकार्डियल मसल को, जैसे ही इम्पल्स मायोकार्डियल मसल को आता है तो क्या होगा, तो जैसे ही इम्पल्स आता है मायोकार्डियल मसल विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। तो आई हैव टोल्ड यू दैट मायोकार्डियल सेल आल्सो, है ना, दिस इज द इनसाइड सेल, द आउटसाइड सेल। इनसाइड सेल इज अ नेगेटिव पोटेंशियल, इनसाइड सेल इज अ नेगेटिव पोटेंशियल। तो मान लीजिए नियर अबाउट -70 मिलीवोल्ट, -90 मिलीवोल्ट, तो इनसाइड मायोसाइट, कार्डियक के जो मसल सेल है, इनसाइड द मायोसाइट देयर इज अ -90 मिलीवोल्ट, राइट। So when the impulse from SA node comes to the myocardial cell, there is a changes in the electrical activity. कैसे, तो you know that sodium is known as extracellular cation, है ना, पोटेशियम इज इंट्रासेलुलर कैटायन, सोडियम विल गो इनसाइड सेल, तो पोटेंशियल जो सेल का नेगेटिव थोड़ा सा कम होते जाएगा, विल कम टू अराउंड -75 मिलीवोल्ट्स। जैसे 75 मिलीवोल्ट्स पे आता है तो रैपिड इनटेक ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम इज देयर इनसाइड द सेल, रैपिड रिपोलराइजेशन, फेज 1। होने का सेल, सेल की इनसाइड पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव, सेल की आउटसाइड पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव। आउटसाइड सेल पोटेंशियल इज पॉजिटिव, इनसाइड सेल पोटेंशियल इज नेगेटिव। when there is a signal, when there is a impulse to the myocardium, myocardial cells undergo electrical changes, यहाँ पे इनसाइड सेल पोटेंशियल नेगेटिव होता है, मान लीजिए -90 मिलीवोल्ट। जैसे ही इम्पल्स आता है इस नोड से, तो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम चैनल ओपन होता है, सोडियम विल गो इनसाइड सेल। सोडियम क्या है, कैटायन है, सोडियम अंदर जाएगा तो क्या होगा, इनसाइड पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव सोडियम क्या है, पॉजिटिव होता है, तो वहाँ पे इनसाइड पोटेंशियल डिस्टर्ब होता है, दैट इज नोन एज डीपोलराइजेशन।
सोडियम will go inside causes the depolarization है. ओके, जैसे ही इनसाइड सेल पोटेंशियल -90 से -70 या 75 होता है, क्या होगा, देर इज अ रैपिड इनटेक ऑफ कैल्शियम आंस, तो मोर सोडियम विल गो, सोडियम अंदर जाता है तो डीपोलराइजेशन होगा, नोन एज अ फेज वन नोन एज अ फेज वन डीपोलराइजेशन. Now at the phase 2 there is a rapid peak repolarization, and again यहाँ पे slow entry of calcium is there which maintain the depolarization. और phase 3 बोलते हैं plateau level. Phase 4 is a rapid repolarization. It changes in the electrical activity of heart cell. हार्ट के सेल में क्या आता है, सेल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है. मान लीजिए ये आपका, यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता प्रॉपर्ली, there is a negativity inside the cell and outside the cell there is a positivity. There is a negative potential. There is a positive potential outside the cell. Now when signals will come, when SN node will send a signal, when SN node send a impulse to the myocardial cell, myocardial cell में क्या होता है ना, तो inside cell is a negative -90 millivolt और outside positive है ना. Sodium is known as a outside, sodium is a extracellular cation, potassium is a intracellular cation है ना. जैसे -90 millivolt, जैसे सिग्नल आता है सोडियम विल गो इनसाइड, जैसे सिग्नल आता है सोडियम इनसाइड, सोडियम अंदर जाता है, तो अंदर का पोटेंशियल नेगेटिव है, सोडियम पॉजिटिव होता है, तो डिस्टर्बेंस इन द पोटेंशियल नोन एज डीपोलराइजेशन. जैसे -90 से -75-80 तक आता है, तो देयर इज अ रैपिड एंट्री ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल कॉजिंग डीपोलराइजेशन नोन एज अ इनिशियल डीपोलराइजेशन फेज 1. सेकंड इनिशियल रीपोलराइजेशन, तो जैसे डीपोलराइजेशन हुआ है, क्विकली मसल सेल विल ट्राई टू रिकंस्टिट्यूट इट्स आयनिक पोटेंशियल, तो रीपोलराइजेशन होता है, थोड़ा सा सोडियम बाहर निकलता है, कैल्शियम भी जाता है सोडियम के साथ. तो हियर अगेन हिस्ट्री क्या है, प्लेटो लेवल, हियर इज अ exit of sodium and entry of calcium is there which is maintained, so that's why phase 3 is a plateau level and phase 4 is known as a final repolarization. तो जैसे सेल का पोटेंशियल डिस्टर्ब हो चुका है वो अभी रीपोलराइज होगा, मतलब क्या, अगेन नेगेटिविटी ऑफ सेल इज मेंटेन्ड बाय रिमूवल ऑफ सोडियम एंड एंट्री ऑफ पोटेशियम, नोन एज एक्शन पोटेंशियल जनरेशन है ना. एक्शन पोटेंशियल जनरेशन, मसल कॉन्टैक्ट कैसे होगा, जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा मसल कॉन्टैक्ट होगा है ना, और जैसे रीपोलराइजेशन होगा मसल फिर से रिलैक्स होगा. रीपोलराइजेशन मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ मसल, डीपोलराइजेशन मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर मसल, कॉन्टैक्ट होगा. ठीक है. एक्साइटेबिलिटी, व्हाट डू मीन बाय एक्साइटेबिलिटी, दिस द एबिलिटी ऑफ सेल्स और टिश्यू टू रिस्पॉन्ड द स्टिमुलस. स्टिमुलस मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस है ना. So excitability is the ability of tissue to respond to the electrical stimulus which is generated in the heart by SNR, followed by mechanical activity. Mechanical activity मतलब क्या है, either contraction or relaxation, contraction or relaxation. जैसे ही स्टिमुलस आता है सेल उसको रिएक्ट करती है either by causing contraction or by causing रिलैक्सेशन है ना. आई होप आई एम ऑडिबल है ना. नो देखो यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब सेल क्या है रेस्ट पे, जब सेल इज रेस्टिंग, तो एट द टाइम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अराउंड -85 to -95 मिलीवोल्ट है ना. रेस्टिंग सेल में, कार्डियक सेल में कितना पोटेंशियल है, -85 to -95. तो साइनोएट्रियल नोड, एस नोड विल
इस नोड का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -55 टू -60। पर इंच फाइबर का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -90 टू -100 डिग्री। तो एक्शन पोटेंशियल जनरेशन, हाउ देयर इज अ difference in the cardiac tissue from other tissue like muscle and other muscle or nervous tissue. So there is a difference in the cardiac tissue and other tissue. जैसे cardiac tissue are to regulatory, मतलब it will generate its own impulse and it will undergo rhythmic contraction and relaxation. बाकी मसल का क्या है, एक बार स्टिमुलस गया, एक ही बार स्टिमुलस केवल कॉन्ट्रैक्ट होगा, स्मूथ मसल, बाकी स्केलेटल मसल। तो इसमें क्या है कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इनसाइड सेल पोटेंशियल इज अ नेगेटिव, आई हैव टोल्ड यू, इनसाइड सेल पोटेंशियल इज अ नेगेटिव, आउटसाइड सेल पोटेंशियल इज अ पॉजिटिव। नाउ फेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल, इनिशियल डीपोलराइजेशन, इज क्विक, इनिशियल डीपोलराइजेशन एक फेज है, बाद में इनिशियल क्विक रीपोलराइजेशन सेकंड फेज है, then plateau level is there and final repolarization, initial depolarization, then quick repolarization, then again plateau level means constant depolarization and final repolarization, repolarization. Now threshold potential क्या होता है? The potential of cell at which there is a abrupt entry of sodium in the cell. Threshold potential -40 millivolt. नेगेटिविटी जैसे डिक्रीज होगा, नॉर्मली -90 millivolt पोटेंशियल है, अभी -40 हो गया, मतलब क्या होगा, कम हो गया पोटेंशियल, नेगेटिविटी कम हो गई। तो -40 जब आएगा तो डीपोलराइजेशन विल स्टार्ट, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल दैट इज अ -40। इनिशियल डीपोलराइजेशन क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ इनिशियल डीपोलराइजेशन इज 0.002 सेकंड, एम्पलीट्यूड इज +20 millivolt due to opening of fast sodium channel. There is a rapid entry of sodium inside the cell that causes the depolarization. Initial depolarization मतलब क्या है? Duration क्या है? 0.002 सेकंड, opening of potassium channel and efflux of few potassium ions. पोटेशियम आयंस इनसाइड होता है तो पोटेशियम को बाहर फेंक देगा, and also closes the fast sodium ion channel opening and opening of slow sodium ion channel. तो कार्डियक सेल में क्या क्या होता है? फास्ट सोडियम आयन चैनल, स्लो सोडियम आयन चैनल एंड कैल्शियम आयन चैनल, स्लो एल टाइप ऑफ कैल्शियम आयन चैनल्स एंड पोटेशियम। तो इनिशियली डीपोलराइजेशन कौन करता है? सोडियम, फेज 0, sodium will go inside cause depolarization, then rapid repolarization due to removal of potassium outside cell and then opening of slow sodium ion channel, right? Now third level is a plateau. Third is nothing but plateau or constant level, you know. Third level is a plateau or final depolarization. So muscle remains for time being in a depolarized state. Plateau or stable period, duration is 200 milliseconds. Atrium 300. At a atrium 200 and at a ventricle 300 microsecond. Opening of slow calcium ion channel here occurs. Calcium ion influx, also sodium influx through sodium ion channels, है ना। मतलब प्लाचो लेवल में क्या है कि स्लो सोडियम आयन चैनल्स स्लोली सोडियम आयन को अंदर धकेलेंगे, एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल से कैल्शियम अंदर आ जाएगा ताकि फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन हो सके। पॉजिटिविटी इज मेंटेन्ड इनसाइड द सेल नोन एज अ प्लाटो। कैल्शियम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। और एक बाद में क्या है? फाइनल रीपोलराइजेशन, उसका ड्यूरेशन होता है 50 to 80 मिलीसेकंड बिफोर रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेप, है ना। Due to efflux of potassium, there is no potassium ion moving out of the cell, है ना। Calcium entering in the cell is also stopped, sodium is stopped, है ना। Final restoration of
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्ट को कैसे होगा, रिमूवल ऑफ सोडियम आयंस बाय सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज फॉर्म, रिमूवल ऑफ कैल्शियम आयन बाय सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज फॉर्म, तो फाइनली अगेन निगेटिविटी आ जाएगा. सो दैट्स व्हाई नाउ रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड, पीरियड इन विच मसल विल नॉट शो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. अभी क्या है, एक साइकिल है, ये जो है ना एक साइकिल है, कौन सा, एक साइकिल है ना. इनिशियली सोडियम अंदर जाएगा है ना, सोडियम अंदर गया, डीपोलराइजेशन करेगा है ना, यहाँ पे पोटेशियम बाहर निकलेगा और सोडियम फास्ट सोडियम, मतलब यहाँ पे क्या है, फास्ट सोडियम आयन चैनल, फास्ट सोडियम आयन चैनल क्या होंगे, ओपन होंगे, डीपोलराइजेशन करेंगे, यहाँ पे पोटेशियम आयन चैनल ओपन होंगे, पोटेशियम को लीक करेंगे, आउटसाइड पोटेशियम निकल जाएगा, और यहाँ पे फास्ट सोडियम आयन चैनल क्लोज होंगे, यहाँ पे स्लो सोडियम आयन चैनल, स्लो सोडियम आयन चैनल ओपन होंगे, और कैल्शियम आयन चैनल भी होंगे, एल टाइप कैल्शियम आयन चैनल, तो दैट लीड्स टू प्लच लेवल. और बाद में क्या है कि सोडियम भी सेल के बाहर निकलेगा वाया सोडियम सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज फॉर्म, एंड कैल्शियम भी निकलेगा वाया कैल्शियम सोडियम एक्सचेंज फॉर्म. ठीक है, तो ये क्या है ना, सोडियम फास्ट चैनल एंट्री होगा, डीपोलराइज करेगा, यहाँ पे थोड़ा रिपोलराइजेशन जिससे प्लच लेवल और, तो इट इज अ वन एक्टिविटी है ना ड्यूरिंग दिस, ये जो है ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब एक बार ट्रिगर हो गया डीपोलराइजेशन तो ये पूरा फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ये फेजेस के बीच में दूसरा स्टिमुलस आ गया ना, तो ये सेल रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल, इफेक्टिव एक्शन पोटेंशियल, तो अनदर स्टिमुलस कैन नॉट एक्साइट द सेल है ना. तो जो ये जो एक फेज चल रहा है 1, 2, 3, 4 फेजेस है ना, ये कंप्लीट जब तक नहीं होता तब तक दूसरा स्टिमुलस कुछ भी कर नहीं सकता. सो दैट इज नोन एज अ रिफ्रैक्टिव पीरियड, दैट इज नोन एज अ रिफ्रैक्टरी पीरियड. सो पीरियड इन विच मसल विल नॉट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, इसमें दो आता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, नो रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ एनी स्टेज ऑफ डीपोलराइजेशन occurs during this period. इसकी मतलब ड्यूरिंग द action potential duration, so if any another stimulus is there that is ignored, that is not responded, so absolute refractory period, then relative refractory period, the muscle will show response if strength of stimulus is high, so it is increased to maximum. जब रिपोलराइजेशन होता है मसल का ड्यूरिंग दैट पीरियड, अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेट्स गया तो कर सकता है, दैट इज नॉट रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड. नाउ रिदमिसिटी मतलब क्या है, सेल्फ एक्साइटेशन, कार्डियक सेल अंडरगो सेल्फ एक्साइटेशन known as autorhythmicity. Autorhythmicity, it is present in the all tissue of heart, but the autorhythmicity, it is a maximum at a SA node, that's why it is known as a pacemaker of your heart. SA node will generate 70 to 80 impulse per minute. AV node can generate 60 to 40. Arterial muscle also has a capacity 40 to 60. Purkinje fiber 35 to 40. Ventricular muscle fiber 20 to 40. What is the rhythmicity? मतलब क्या? So it is a capacity of heart muscle to undergo spontaneous depolarization or self excitation. Now जो impulse ऐसे नोड बनाता है उसके बाद में कंडक्ट होता है, तो कंडक्शन सिस्टम ऑफ योर हार्ट. आफ्टर ऐसे नोड the impulse is transmitted to AV node, then bundle of his, then right and left bundle branches and Purkinje fiber. So they are known as a conduction system of your heart. है ना. impulse generation काम किसका है? So impulse generation is a work of SA node and impulse conduction is a work of AV node, Purkinje fiber, bundle of his and AV node, bundle of his, right and left bundle branches and Purkinje fiber. It is known as a conduction system of your heart. याच्यावरती पण क्वेश्चन आले, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है. कंडक्शन सिस्टम ऑफ एसे नोड बिलो द सुपीरियर वेना कवा,
in a right atrium. AV node is situated at a posterior portion of intra-atrial septum. दोनों एट्रिया के बीच लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल के बीच में एक सेप्टम होता है, पार्टीशन होता है, उसके बीच में एवी नोड होता है. Impulse from SA node is conducted to both atria and reaches to the AV node via intranodal fibers. So the bundle of His continues from AV node to the and divides into left and right branches for the respective ventricle. मतलब SA नोड जनरेट करता है, AV नोड के पास जाता है और ऑरिकल के पास भी जाता है, ऑरिकल कांटेक्ट होते हैं. AV नोड से स्लोली वो इम्पल्स आपके मतलब है ना, बंडल ऑफ हिस लेफ्ट एंड राइट बंडल, उसके बाद में वही बंडल डिवाइड होके परकिंज फाइबर बनाते हैं और दोनों वेंट्रिकल को सप्लाई होते हैं. So AV node will conduct the impulse, will transmit to the that Purkinje fiber, bundle of his Purkinje fiber to contract the ventricles. So impulse from that AV node divides into left and right branches of respective ventricle and bundle. This bundle of his has many Purkinje fiber that will spread impulse all over the ventricles. This is known as the conduction system of your heart. Impulse conduct कैसे होता है? इससे नोड तो इम्पल्स जनरेट करेगा, एवी नोड कंडक्ट करेगा, बाद में बंडल ऑफ हिस के ऊपर जाएगा, बाद में परकिंज फाइबर वो इम्पल्स स्प्रेड करेगी. राइट, रिमेनिंग पार्ट विल सी टुमारो. कल अपन देखेंगे रिमेनिंग पार्ट. अगेन टुमारो आई विल एक्सप्लेन यू इन अ शॉर्ट how there is a control of blood pressure, and then we'll see the diseases related to blood vessels and the heart. बाद में pharmacology of cardiovascular.